ثم قام بكتابة سطرين على هذا الظرف ثم وضعه في ظرف آخر، وتعهد هذا الظرف في عهدة الشيخ محمد تيمور. قال له الخليفة في حالة وفاتي يجب عليكم أن تتصرفوا حسب التعليمات الموجودة في داخل هذا الظرف. اتضح فيما بعد أنه كتب سطرين على الظرف، أحدهما كتب باللغة العربية وقال فيه حسب نموذج أبو بكر، وبالثاني باللغة الأردية وقال فيه بايع الشخص المسمى داخل الظرف. داخل الظرف كان هناك ورقة مكتوب عليها محمود أحمد. بعد ذلك تحسنت صحة حضرته واسترد الظرف من الشيخ محمد تيمور وقطع هذا الظرف. Hazrat Khalifatul Masih I passed away on the 13th of March 1914. It was a defining moment in the history of the Jamaat. On one hand, members were struck with grief by the death of the first Khalifa. On the other, they were faced with deadly intrigues from opponents of the institution of Khilafat. हुआ ये कि जो मौलवी मोहम्मद अली साहब थे और उनके बाद साथी, वो दरअसल मसीह अव्वल के दौर में ही बाज साजिशों में मसरूफ थे कि आपके बाद आगे खिलाफत का सिलसिला न चले, और वो खुद अंजुमन के बाद अहम ओहदों पर फायज थे। अब ये बहुत बड़ा फितना था जमात की वहदत के लिए। उसी सिलसिले में हुजूर ने मौलवी मोहम्मद अली साहब से बराह रास्त भी बात की। मौलवी मोहम्मद अली साहब ने कहा कि जी देखें, बात यह है कि मशवरा होना चाहिए और जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कहने लगे कि 4-5 माह तक जमात इस बात पर गौर करे और फिर तबादला ख्यालात के बाद जो फैसला हो उस पर अमल किया जाए। Hazrat Muslim who was very much against this, and he pointed out the impracticality of such a course, that leaving a vital decision where a community required a guiding hand and a firm hand to guide it through trials and tribulations, to be left out for 4 to 5 months. He pointed out that it was wholly impractical, and that the members needed to decide immediately as to who should be the Khalifa of that particular period. And as a Muslim, Ahmad even said that they would be willing, anyone would be willing to pledge the oath of allegiance to anyone who would be put forward at that time, just for the unity of the community at that time. Later the same evening, Sahibzada Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Sahib summoned 60 leading members of the community who were present in Qadian for consultation. After some discussion of the situation, it was unanimously agreed that before the internment of the Khalifatul Masih, his successor, who should command the obedience of the community, should be elected and should lead the funeral prayers of the deceased Khalifa and should arrange for his burial. Hazrat Maulana Nuruddin की वफात पर ये जो इख्तिलाफ था ये सामने आया और पता चला कि मौलाना साहब ने पहले से कोई ट्रैक्ट तैयार करके रखा हुआ था जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात जो हैं वो बयान किए हुए थे और वो जमातों में पहले से भिजवाया था हज़रत खलीफा अव्वल की जिंदगी में। तो ये अजीब बात है कि हज़रत खलीफा अव्वल की जिंदगी में ही इनकी इस किस्म के ख्यालात को फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि जमात पहले ये फैसला कर चुकी थी और यही अंबिया का तरीक था, यही अलवसीयत में भी इसका जिक्र था कुदरत सानिया का, तो इसलिए जमात इस बात पे कायम हुई स्वाय चंद लोगों के कि हम में खलीफा मौजूद होना चाहिए। By midday on the 14th of March, more than 1,000 members of the movement had arrived in Qadian from outside. In the afternoon of that day, Sahibzada Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Sahib held a consultation with the family members of the promised Messiah, peace be upon him, and their close relations on the situation that confronted the movement. When Hazrat Muslim met the members of his family and other close relatives, there were two things that were paramount. One was the unity of the whole community, and second was that there needs to be someone who could succeed Hazrat Khalifatul Masih and lead the community from that point forward.
The dissenters had hoped that because of the misinformation they had disseminated, a good majority would agree with their stance in the dispute. The family members, however, stood resolute. Finally, on the 14th of March, all the Ahmadis who had come from near and far gathered at the Noor Mosque after the Asr prayer service. There were at least 2,000 members present. उस मौका पर भी मौलवी मोहम्मद अली साहब और बाज उनके साथी वहां मौजूद थे और उनकी कोशिश थी कि इंतखाब ना हो। वहां पे करीबन 2000 का मजमा था। तो सबसे पहले तो नवाब मोहम्मद अली खान साहब ने हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल की एक वसीयत पढ़कर सुनाई। In that will he has emphasized that the institution of Khilafat should be upheld, and when I pass away, then a pious person should be elected the next head of the community. हजरत मौलवी मोहम्मद हसन अमरोही जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बुजुर्ग साहबी थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं ये सारी सूरत हाल देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे मुनासिब और मौजूं शख्सियत हमारे अंदर मिर्जा महमूद अहमद की है। इस पर हर तरफ से हजरत मियां साहब की आवाजें बुलंद होनी शुरू हुई कि हमारी बैत लें। लोगों की ये कैफियत थी कि इश्तियाक के साथ और मोहब्बत के साथ कि वो चाहते थे कि हम फौरन एक इमाम, एक खलीफे के हाथ पर इकट्ठे हों। और बिलाखिर हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब से बड़ी शिद्दत के साथ, इसरार के साथ कहा गया कि आप हमारी बैत लें। हुजूर ने कुछ तवक्को फरमाया और फिर जब आपको पूरी तरह से शराय सदर हो गया कि ये सारी जमात इस बात का इकरार कर रही है और वो बैत के लिए तैयार है, तो आपने हजरत मौलवी सरवर शाह साहब को कहा कि मुझे तो बैत के अल्फाज भी नहीं आते। तो मौलवी साहब ने फरमाया कि बैत के अल्फाज मैं दोहराता हूं, आप साथ साथ दोहरा सकते हैं। तो इस तरह हजरत मौलवी सरवर शाह साहब बैत के अल्फाज दोहराते थे। हजरत मुस्लिह मौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत सानिया की बैत ली और लोगों में इतना जोश और जज्बा था कि वो जो एक दो आदमी बात करना चाहते थे वो खुद ही फिर एक तरफ हो गए। That is how Hazrat Musleh Moud Raziyallahu Ta'ala Anhu was elected the second successor to the promised Messiah alayhi salatu wasalam and became his second caliph. His age was only 25 at that time. Shortly after the election, the newly elected Khalifatul Masih II, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, led the funeral prayers of Hazrat Khalifatul Masih I in a vast open space next to the Noor Mosque. The sole purpose of the establishment of the Ahmadiyya Muslim Jamaat is preaching and propagating the message of Islam, and it was to this purpose to which Hazrat Khalifatul Masih II paid immediate attention upon his election as Khalifa. Soon, Ahmadiyya Muslim missions started opening in countries outside India. In Europe, missions were established in the UK, Switzerland, Holland, Spain, Denmark, Germany, Sweden, Norway, France, Italy, Bosnia and Albania. In the Americas, missions were opened in the USA, Trinidad and Guyana. In West Africa, missions were opened in Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Gambia, Zambia, Ivory Coast, Togoland. In East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Mauritius. Missions were also established in South Africa, Palestine, Lebanon, Syria, Aden, Egypt, Kuwait, Bangladesh, Bahrain, Dubai, Fiji, Myanmar, Sri Lanka, Hong Kong, Singapore, Japan, Malaysia, Philippines and Indonesia. Missionaries were also sent to Iran, Jordan, Ethiopia, Somalia, Congo, Sicily, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Hungary, Poland and Argentina. More than 30 mosques were constructed in East and West Africa, not to mention mosques in Washington, Hamburg, Frankfurt, Zurich, The Hague, London in the UK, Denmark and Sweden. Besides widespread preaching of Islam,
He was deeply concerned about the spiritual upbringing of members of the Jamaat. He placed huge emphasis on education. He wanted to ensure that the whole community, in fact the whole of the Muslim Ummah, but primarily the community, was as learned as possible, as educated as possible.